No doubt. May Allah keep you healthy as well. Ameen, So, ameen. Dr. Maria, stage is over to you, and you can start Okay. now. Thank you so much. Thank you so much. So, welcome everyone. As Rana Kamran told, my name is Maria. So, I'm just presenting this lecture to you. The topic is geriatrics. So, first of all, I have no financial relationship to disclose, and I will not use any off-label user investigational uses in my presentation. So, just a minute. Wait. Wait, my slides are not moving. Okay, the screen is coming now. You can see my screen? Yes, doctor. Okay, because I don't know, it's not moving from my side. Okay, so starting towards the topic actually, geriatrics का topic है. It's not a too big topic, but इतना छोटा भी नहीं है. Geriatrics actually क्या है? Geriatrics, it's actually a branch of medicines which is concerned with the diagnosis, treatments, and preventions of the diseases in older people. And the problems specific to the aging. Yeah, okay. So usually actually aging क्या है? वो people या वो human being जो after 60 actually fall करते हैं geriatrics की branch के अंदर. यानी एक normal process है जिसके अंदर यानी बेबी बॉर्न होता है, बॉर्न होने के बाद एक पीक डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, उसके बाद एक टाइम आता है जब वो सारे प्रोसेसेस जो हैं वो डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं. तो आफ्टर 60 जो है यूजुअली जो पीपल होते हैं ओल्डर एज पर्सन्स हैं आप कह लें, वो इस ब्रांच ऑफ कैटेगरी में आ जाते हैं. तो वही चीज़ कि उनकी बॉडी में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, उनकी ग्रोथ में, उनकी डेवलपमेंट में. और ये जो जीरियाट्रिक्स की फील्ड है एक्चुअली ये बेसिकली कंसर्न ही उन ओल्डर पीपल के साथ है, उनकी जो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और फिर उन जो डायग्नोस्ड हुई हुई डिजीजेज हैं उनकी प्रिवेंशन का. ठीक है, इसमें जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एजिंग है. एजिंग जैसे मैंने आपको बताया एक नॉर्मल प्रोसेस है वेयर बाय द ह्यूमन बॉडी डिक्लाइंस आफ्टर पीक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और usually aging results with the body which is response to our environmental stressors according to the person's health, lifestyle factor together with the genetic makeup. यानी aging क्या है? Aging actually जो भी ह्यूमन बॉडी है वो एक्चुअली रिस्पॉन्ड करती है आपके एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स. आपकी लाइफ में जो भी आपका स्ट्रेस फैक्टर है अकॉर्डिंग टू योर पर्सन की हेल्थ और उसका लाइफस्टाइल फैक्टर टुगेदर, उसका जो जेनेटिक मेकअप है यानी जो जेनेटिकली आपको चीजें कह लें या जेनेटिकली आपको जो आपको मिल रहा है अपने पेरेंट्स की तरफ से, वो सब जो है रिजल्ट करती हैं एजिंग को. जिसके अंदर यही होता है कि जैसे आप आजकल जैसे जो जिस तरह एनवायरमेंटल स्ट्रेस चल रहा है, लोग जिस तरह रह रहे हैं, सैलरी इश्यूज, जॉब इश्यूज, या आप ये कह लें कि लाइफ स्टाइल फैक्टर्स जो लोगों के बदल चुके हैं, ये सारी चीजें एक्चुअली जो हैं वो इम्पैक्ट डालती हैं आपकी एजिंग के ऊपर. Okay, so what functional changes actually associated with aging? Actually there will be a quality of life and a physical functions. Okay, so I think quality of life and this physical function becomes more important than the duration of life. Like if you have a 50 years or you are a 50 years old and you don't but you don't have a quality of life, means you can't enjoy your life actually. Okay, so I think the duration of life, if you are a 70-80 years but you don't have a good quality of life, so you cannot enjoy your life actually, and your physical functions are also not that much good to enjoy. Okay, so in geriatric syndromes actually there will be two things, falls and deliriums. Okay, mostly जो geriatrics patients हैं या people हैं यूं कह लें, उनके अंदर दो चीजें बड़ी कॉमन होती हैं, एक फॉल एंड डिलीरियम. अब ये क्या होता है ये मैं आपको आगे बताती हूँ. फॉल एंड डिलीरियम, एक्चुअली फॉल इज एक्चुअली
like they are unable to यानी आप यूं कह लो कि फॉल का जो रेशियो है वो एजिंग के साथ बढ़ता जाता है जीरियाट्रिक्स के अंदर। ओके, अब इसकी इटियोलॉजीज क्या है पॉसिबल? psychoactive medications, polypharmacy, hypoglycemia, hyponatremia, myocardial infection, UTI infections as well. Like most of the like psychoactive जो drugs हैं, they can cause delirium. But delirium is what means that there is abrupt changes in the brains which can cause mental confusion and emotional destructions. So there will be a chance of you can say fall. Okay, and it will increases and then increases the risk of fracture. So you can link like that. Okay, and usually जो aging है वो आप इसको यूं भी कह सकते हैं हमारे some eyes पे कंसिस्ट करती है। लाइक उसके अंदर इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन हो सकती है, इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, इंस्टेबिलिटी हो सकती है, इमोबिलिटी हो सकती है। ओके, सो इफ the process of aging, if we detect early, then we can improve the symptoms. Okay, we cannot decrease because as the age will increase, the process of aging also increase, you can say. Okay, so if we can improve the symptoms of aging, then we can decrease the disability and the mortality rate and hospitalization of these geriatrics patients actually. Okay, so what are the contributing risk factors related to this aging? Dementia, stroke, vitamin B12 deficiency, poor hearing, lack of sleep. Yani all these factors can impact our geriatric people. Okay, and what also impact come instrumental activities of daily living. Yani shopping, cooking, household work hai, managing medications hai, they can't perform all these activities. Then activities of daily living also impact what is yani activities of daily living, feeding, dressing, bathing. So means there will be different types of activities. It will impact by these syndromes. Okay, then you can say mood. Geriatric depression scale. There will be some scales in geriatrics, which is from 1 to 15 actually. So as the number increase means there will be severity in the disease. And as the number will less means there will be mild. So what is the common geriatric syndromes are fall and delirium. And as I told you that delirium is sometimes because of these abrupt changes which occurs in the brain. And this is very common actually. What are the examples in next slides? I will tell you. So journal physiological changes in elderly actually. There are as the decline occurs in geriatrics patients, so all the systems, yani it will become overall actually in GI, skin, body composition, liver, renal, all the things. If the impact is coming overall, the body actually functions. So like in GI, like there is changes in the stomach pH, GI blood flow may decrease, maybe there is slow gastric emptying time or slow GI transit. So what then ultimate effect comes that there will be decreased absorption of the drugs and nutrients which required acidic medium, or maybe because of slow gastric emptying time the medicine will retain in the GI like and maybe because of these retention of the drugs more acidity occur. Okay, so and absorption rate also may be prolonged because of these. In skin, thinning of the dermis occur, loss of subcutaneous fats in geriatric persons. So what will happen? Whatever is the transdermal formulations, their absorption will decrease. Then body composition in geriatrics, after 60, the total body water is decreased. There is increase in body fats. Okay, lean mass also decrease. So because of these, maybe it impact on the volume of distribution and maybe accumulation of lipid soluble drugs like benzodiazepine, diazepam. Maybe they will accumulate more, and then when they accumulate more means there will be more side effects. Okay, then decrease in the volume of distribution. So water soluble drugs also there will be less absorption, and there will be less impact of those medications. Okay, so then liver. Also there is decrease in liver mass, decreased blood flow. Sometimes there is decrease
in the different enzymes which can impact or in metabolism. So what will happen? Decrease fast extraction and metabolisms. That's why metabolism decreases in the elder age persons. Half-life will increase, so more drug retain. Okay, decrease clearance of the drug, especially those which are metabolized through liver. Okay, then renal. Most of the time we are using this renal function, checking the renal functions as in ICU settings, even in hospitals. We are checking the GFR or serum creatinine, because most of the drugs are eliminate through renal system. So we need to do the dose adjustment of these drugs. Sorry, where I am. Okay, this slide. Okay, now what happened? This is just the same thing. Just I will show you some examples of different drugs. Like as per absorption, as I told you, GI system is involved. So because of decreased acidic medium or decreased subcutaneous weight, there is some decrease in the increase in the retention of the drugs, and there will be maybe increased risk of ulceration from some of the drugs like NSAIDs, bisphosphonate, potassium chloride, whatever we are using, acidic drugs. Then distribution, because of lipid soluble medications, as I told you, diazepam, benzodiazepine, their half-life increased, so as maybe they are more retaining in the body, and there will be more adverse effects. Okay, the medicines which are highly albumin bound like phenytoin, so maybe there is large fraction of the free active drug in the body. Then metabolism as well, like decreased morphine and propanol clearance. So reduction is first part, metabolism. So these all things actually, and like I told you, like different metabolismic enzymes. So maybe it also depend upon genetics, sex, age, or different type of drugs which are we some of the this elderly patient mostly using multiple drugs actually. So because of this also drug interactions, and maybe due to this enzymatic changes, there will be decrease or increase in the metabolism of the drugs. And the same elimination, as I told you, we need to adjust the doses as per their renal function. So there are certain pharmacodynamic changes also occurs in geriatrics, like increased sensitivity, decreased sensitivity, and impaired hemostasis, optimal pharmacotherapy. Then we need to do some drug-related risk assessment in this class of the in this branch actually. Increased sensitivity actually, like the receptors are too much sensitive. So what occurs, like benzodiazepines and opioids, they are more prone towards the effects, especially side effects, you can say. Antipsychotic, metoclopramide, they are more prone for extrapyramidal effects, tardive dyskinesia because of these drugs, or tricyclic antidepressant, alpha blockers, those who can create more these class, then more prone to orthostatic hypotension. Then there will be decreased sensitivity towards the receptors like beta blocker, beta agonist. So usually in old age persons, the beta blockers are not a choice of therapy because they develop the more prone to develop the tolerance for this. And like impaired hemostasis, diuretics, angiotensin converting enzyme inhibitors, so they are more prone to electrolyte imbalances, and their hydration state is also vary, and they are more prone for electrolyte imbalance, and they have more dehydrated. Okay, so in optimal pharmacotherapy, we need to reduce the risk, and how we can reduce the risk by adjusting the doses of the medication, especially age-associated, changes in the drug pharmacokinetics and dynamics occur. So we need to adjust the doses in this class. Then drug-related risk assessment, because as these patients are sometimes using overuse of medications, like unnecessary, they are going to multiple physicians sometimes for different treatments. So what happened, that might be
they will not inform the other physician that what medication they are using. So what happening ke दो different prescriptions होती हैं जिनके अंदर similar medications होती हैं, especially जैसे multivitamins हैं और पेन किलर्स हैं, क्योंकि इस एज का ग्रुप जो है वो मोर प्रोन टू यूजुअली पेन्स और दिस टाइप ऑफ मेडिकेशंस पे होता है, मल्टीविटामिन्स पे होता है। तो क्या होता है कि अननेसेसरी ड्रग यूजेज हो जाता है सेवरल प्रिस्क्राइबर के पास जाने से, और बिकॉज ऑफ दिस एजिंग के फैक्टर की वजह से इनको डिमेंशिया होता है, दे आर मोर प्रोन टू डिमेंशिया। सो उनको खुद याद नहीं रहता कि वो कौन सी ड्रग्स ले रहे हैं, और उसके अलावा अंडर यूज ऑफ मेडिकेशंस हो सकता है, इनएडुकेट डोजिंग हो सकती है, या डिमेंशिया की वजह से जो है वो अपनी सेवरल मेडिकेशंस को ओमिट करने लग जाते हैं। समटाइम्स जो जीरियाट्रिक की क्लास के लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा मोर प्रोन टू एडवर्स इफेक्ट होते हैं, तो समटाइम्स दे फील दैट बिकॉज ऑफ दीज एडवर्स इफेक्ट दे आर ओमिटिंग द डोजेस ऑफ दोज सम मेडिकेशंस। सो उसकी वजह से समटाइम्स डिजायर्ड इफेक्ट जो है वो मेडिकेशन का नहीं आता। उसके अलावा नॉन एडेरेंस लाइक एज आई टोल्ड यू डिमेंशिया और कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स की वजह से, या कॉस्ट ऑफ द मेडिकेशन स्पेशली इन आवर कंट्री, सम ऑफ द एल्डरली पीपल बिकॉज दे डोंट हैव जॉब्स, दे आर नॉट अपनी इस भूलने की बीमारी की वजह से और अपने जॉब के फैक्टर्स की वजह से भी जो है ना वो कॉस्ट को बहुत यानी कॉस्ट की वजह से जो है ना मेडिकेशंस लेना नहीं चाहते हैं, तो नॉन अडेरेंस आ जाती है। और फिर विड्रॉल सिंड्रोम्स है कि एब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स लाइक एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हाइपरटेंसिव, ओपियोइड्स, इन विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं उसका इम्पैक्ट बहुत तेजी से आता है जीरियाट्रिक की क्लास में। सो बिफोर प्रिस्क्राइबिंग the medications, drug related risk assessment is very necessary in this class of people. Then start moving towards the first topic in this geriatrics, actually dementia, which is very common. What is dementia is actually cognitive decline in complex attention, executive function, learning, memory, language, or motor or social coordination, which interferes with the work or the social functions. Actually, in dementia, what happens? Usually, this people, they are usually forgetting their routine task actually. Okay, and they are unable to organize their task, and they have having and understanding the instructions of the others. And because of these things, they are confined. Because there is their issue is that they don't want to go outside in a gatherings, and they can confine themselves like that. And this when it's occur actually, mostly about 30 to 50% of the people who are 85 years or above having this problem, and about 6% are above 65 and above suffered with suffered with the dementia. So this much percentage, this is just American, from the BCPS book I took the data. So this is the age group. So 30 to 50% are those who are 85 years and above, and 6% are those which are above 60. So they are suffering with this dementia disorder. Okay, so in this one, what are the points which we need to consider actually? First is delirium. The delirium is what I told you in previous slide, that it should be ruled out first, because it's a geriatric syndrome as well, in which there is abrupt changes occur in the brain and that cause the mental confusion and emotional disruption. So what are the risk factors for this? Sometimes medication like sedative or hypnotics also cause the delirium, abrupt changes in the brain of the person. And sometimes like patients who are in a chronic illness like in ICU setting, so when they will step down from this ventilators or ICU setup, so they will also have, because they are on long-term hypnotic sedatives or opioid drugs. So when they step down, there is abrupt changes. So when these abrupt changes coming, there is a problem in the thinking or motor symptoms of those. So then mental confusion and emotional disruption occurs in those people. So there is a risk factor because of medications. Delirium risk factors are medications, some sort of chronic illness, sometimes infection also causing delirium, as well as metabolic imbalance like low sodium.
So in mild cognitive impairment, MCI, actually there is deficit in cognition, but it does not meet the criteria of dementia. Yani in mild cases, they can still manage their task, take care themselves, and they will fulfill their task. But in severe conditions of the dementia, sometimes people are, you can say, depend on the other persons for performing their task. As I told you, sometimes some instrumental task or daily activities, they are then depend upon the other persons. So Alzheimer is the most common type actually of dementia. So comparison of the memory impairment and the dementia with Alzheimer disease. So there are some different, you can classes or forms actually. So one is like the MCI, which is mild cognitive impairment. In this, actually, there will be no interference in the work or social functions. So usually 1 in 5 progress to Alzheimer's actually. And this can be eliminate or control risk factors for dementia. Actually, we can eliminate and control the risk factors and may use cholinesterase inhibitors, which reduce the risk of progression. Okay, then vascular dementia, actually, it includes the focal neurological signs and symptoms. It can be there is radiological evidence of stroke actually, and usually the onset is within 3 to 6 months of stroke actually. Okay, so in this actually you can say sometimes after stroke or this type, sometimes cardiac or vascular risk factors can cause this vascular dementia. So in this class actually, in this type, cholinesterase inhibitors or memantines are not effective, and this is actually abrupt deterioration occurs in this one. And then Lewy body dementia. In Lewy body dementia, actually there is fluctuating cognition, which is pronounced, and variation occurs in attention and alertness. Sometimes recurrent visual hallucination occurs, and there are motor features of usually Parkinson's के features जो है नजर आते हैं Lewy body dementia के अंदर. In this actually what the treatment we can take, especially avoid करें typical antipsychotics को, because वो worsen कर सकते हैं motor symptoms को, but we can use cholinesterase inhibitor. Lewy body dementia में actually क्या होता है, there will be an abnormal deposition of protein होता है in brain, which leads to have problem in thinking, movement or behavior and motor symptoms जो कि Parkinson's के होते हैं especially. तो डिमेंशिया ऑफ एडवांस पार्किंसंस है, फिर उसके अंदर क्या है, पार्किंसन डिजीज ऑनसेट होती है, प्रीडेट्स करती है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स को. यूजुअली ये लेटर स्टेज ऑफ पार्किंसन डिजीज में होता है. स्पेशली अवॉइड टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स व्हिच मे वर्सन द मोटर सिम्पटम्स, may use cholinesterase inhibitors. The classes of the drug I will share it to you in next slides. Then frontotemporal dementia है. It also affects personality, behavior, self-care and language actually. Onset is in ages of 45 to 60 है, and with a 2 to 10 years course के दौरान. This one also cholinesterase may worsen behavior and cause agitation. So usually serotonin inhibitors or trazodone जो है वो beneficial है. Frontotemporal में actually क्या होता है usually के it's not a common actually, but maybe because of the loss of nerve cells in frontotemporal lobes of brain, and may cause the shrinkage of these lobes, which then impact on the language, behavior and the personality. So it's not a common actually. Then comparison. This slide actually this is just because sometimes some of the different deficiencies or decreased levels of some of the
disorders also impact the memory, like vitamin B12 ki deficiency also may progress the memory loss. So in this, what we can do, that we will replace the vitamin B12 according to the standard protocol. And hypothyroidism, sometimes deficient or inadequate replacement of thyroxine also can cause this one. There is some experimental studies actually which are reported that thyroid hormone also induce some changes in the amyloid precursors, which are major component and found in brain. So ultimately increase the cognitive impairment. So what is the, but these are actually reversible causes, means like you will give the treatment of levothyroxine, yani do replacement according to the standard protocol, and those will reverse. So depression also sometimes, trouble in concentrate, depression की वजह से भी जो है, जो person है वो उसको trouble होती है concentrate करने में और memory के ऊपर, and sometimes what happened that lack of interest show करते हैं, and depression की वजह से they have that attitude that I don't care for anything like this. So इसके अंदर हम ट्रीटमेंट जो है वो डिप्रेशन के जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं. देन NPH है, NPH इज एक्चुअली सम फंक्शनल हाइड्रोसेफेलस है. This is also, because of this also progressive memory loss, incontinence and gait abnormalities यानी posture abnormalities हो सकती हैं. Symptoms जो है वो improve होते हैं after lumbar puncture, और इसके अंदर होता क्या है, there will be too much fluid build up in the brain without increasing the pressure actually, and usually it's occur at the age of 60. So intervention क्या हो सकती है कि surgical placement of ventricular shunt की वजह से आप उसको remove कर सकते हैं. So these are some reversible causes. Now some assessment tools हैं जो कि different stages आपको बता सकती हैं अल्जाइमर की. इनके अंदर एक MMSE स्केल है, SLUMS एग्जामिनेशन है, मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट है, मिनी कॉग असेसमेंट है. ये चार्ट जो है बुक से ही मैंने लिया है. सो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, 30 पॉइंट्स स्केल हैं सबके. सिर्फ मिनी कॉग असेसमेंट इज द 5 पॉइंट स्केल है. हायर स्कोर इंडिकेट्स द बेटर फंक्शन. ओके, सो इसमें सबसे ज्यादा जो है MMSE स्केल है जो कि यूज किया जाता है. इसके अंदर अब आप देख सकते हैं माइल्ड में जो है स्केल 20 to 24 है, मॉडरेट में 10 to 19 है इन बिटवीन, सिवियर में लेस देन 10 है. सो अब इसमें क्या है, लाइक एग्जांपल्स अगर देखा जाए तो माइल्ड के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, वर्ड फाइंडिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखें तो लॉस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज जैसे लॉन्ड्री है, हाउस कीपिंग या मैनेजिंग मेडिकेशंस, या मे गॉट यानी दे लॉस्ट इन अ वे, और इस टाइप का इम्पैक्ट आ सकता है. देन मॉडरेट के अंदर जो है डिसोरिएंटेशन हो सकती है टू टाइम एंड प्लेस, इनएबिलिटी टू एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड कन्वर्सेशंस, जैसे मैंने आपको बताया कि दे कांट गेट इन, कंफ्यूज होते हैं एंड दे कांट पुट देमसेल्फ, यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करना शुरू कर देते हैं और कन्फाइंड हो जाते हैं अपनी प्लेस पे. इसके अंदर फंक्शनल लॉस क्या आता है, दे नीड असिस्टेंट विद ऑल द एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ, लाइक बाथिंग है, ड्रेसिंग है, टॉयलेटिंग है, दे नीड समवन टू असिस्ट देम. ओके, देन सिवियर के अंदर फिर आप लॉस ऑफ स्पीच है, एम्बुलेशन है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ बाउल एंड ब्लैडर है. सो दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑल द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ, लाइक फीडिंग भी नहीं कर सकते हैं अराउंड द क्लॉक, दे नीड समवन टू टेक केयर देम. सो देन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, यानी 2 क्लास ऑफ ड्रग्स जो हैं वो यूजुअली यूज की जाती हैं, कोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर और ग्लूटामिनर्जिक थेरेपीज हैं. कोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर्स के अंदर वी हैव डोनापिजिल, रिवास्टिगमिन, गैलेंटामिन है. ये चार्ट भी वहीं से लिया गया है, इसकी डिफरेंट डोजेस हैं, ये सब डोजेस आपको देखनी पड़ेंगी. ठीक है, ये कोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर्स हैं एक्चुअली. ओके, सो they are actually because in dementia actually there will be decrease in acetylcholine, so these drugs actually prevent the breakdown of acetylcholine and boost the cholinergic transmission. So mostly all of these dementia drugs therapy need actually 3 to 6 months evaluation with the tools, and if within 12 weeks of goal
in within 12 weeks, actually, if you achieve the goal of the therapy, then we can taper down. But abrupt discontinuation actually can lead to rebound condition. Okay, so अब इसके अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ देखें, माइल्ड टू मॉडरेट के अंदर यूज किया जा रहा है, ठीक है, और जैसे ग्लूटामिनर्जिक है, इसके अंदर इसकी रीनल डोज एडजस्टमेंट नेसेसरी है. ओके, देन ग्लूटामिनर्जिक में फिर मेमेंटाइन है, ठीक है, जो कि एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जो कि ब्लॉक करते हैं ग्लूटामिनर्जिक ट्रांसमिशन को. दे आर लेबल्ड फॉर मॉडरेट टू सीवियर अल्जाइमर और मे बी यूज इन कॉम्बिनेशन विद एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर्स एज वेल. इनकी कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट भी आती है. सो समटाइम्स इफ कोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर्स विल नॉट प्रोड्यूस इम्पैक्ट, सो कॉम्बिनेशन में भी फिर यूज की जा सकती हैं. ओके, then adverse effects like cholinesterase inhibitors, there are certain adverse effects like GI impact है, CNS पे है, cardiac पे है. GI में then nausea, vomiting, diarrhea, elevated risk factor of GI bleeding भी है. then CNS में headache, insomnia, dizziness है. Cardiac में bradycardia, orthostatic hypotension, all those which are the acetylcholine esterase inhibitors के जो impact है वो है. उसके अलावा ग्लूटामिनर्जिक के अंदर एजिटेशन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, डायरिया, डिजीनेस, कंफ्यूजन, हेडेक है. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कॉमन साइड इफेक्ट जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको सम साइड इफेक्ट्स जो हैं वो दिए जाते हैं और उसके बाद पूछा जाता है क्लास ऑफ ड्रग के बारे में. तो these are some common adverse effect which will occurs after taking these two class of the drugs. Okay, then there is one clinical study. 75 years old woman with AD who lives at home with her husband has been treated with donepezil 10 milligram daily for about 3 years. When she began therapy, her MMSE score was 21/30. Her present MMSE score is 17/30. The patient cannot perform most IADLs, but can perform most ADL with queuing. With the help of someone, they can perform. After 2 months ago, her donepezil dose was increased to 23, but she could not tolerate it, and it was reduced back to 10 milligram daily. Her husband asked about changing her drug treatment to drug. And just a minute, I can't see this one. Who is this? Not tolerate her, sorry. Her husband asked about changing her drug treatment to help maintain her function, which is the next best course of action. Actually, in this case, if you can see कि वो already जो है वो 10 milligram ले रही थी 3 years से, लेकिन जो उसका MMSE score है उसके अंदर कोई बहुत खास डिफरेंस या फर्क नहीं आया, ठीक है. और जब डोज इंक्रीज की गई तो वो जो है टॉलरेट नहीं कर सकी, तो उसको रिटर्न बैक कर दिया गया 10 milligram के ऊपर. सो नाउ we can see that when one drug is not working or not performing that much impact, so what we can do, we can add on another therapy. So इसका जो correct answer है to initiate mementine यानी glutaminergic therapy को जो है वो add on किया जाएगा. Then we have some behavior and psychological symptoms of dementia. अब ये भी बुक से लिया गया है. इसमें देखें MMSE स्कोर है. अब 25 to 20 as I told you माइल्ड के अंदर आता है. जितना हाई स्कोर होगा that one is a better. So memory loss है, poor drawing, mood swings हैं, mild executive functions के अंदर problem आ रही है, mild personality changes है mild में. Then moderate के अंदर they are unable to learn. Maybe they have agitated, aggressive, psychosis होगा, confusion होगी, because they need assistant for their activities of daily यानी life के routine में जो भी उनकी activities है उनमें they want the help for some other person. They are depending upon the others to do their activities of life. So because of this actually also behavior impact आता है, psychological impact आता है. उसके अलावा severe stages के अंदर क्या होता है, like incontinence होगी, loss of daily activities of life है, confined to bed होंगे. Just a minute.
sorry. Then they are in severe, as I told you, कि वो यानी totally depend होंगे some other person's help के ऊपर, उनमें confined to the bed होंगे. That's why उनके अंदर abnormal यानी incontinence, loss of activities, daily activities हैं. Why it's not moving? I don't know. Okay, so now drug treatment for this behavior and psychological symptoms. Like anxiety hai, so what we can do, treatment options after non-pharmacological, we can go for SSRI, SNRIs, bispirone use कर सकते हैं, gabapentin है, but we can limit the benzodiazepines because they cannot remember the things. That's why maybe anxiety come over. Then apathy hai, they are showing lack of interest in their activities. Okay, and this is the most earliest symptom है actually. Non-pharmacological treatment ये है कि आप patient को tailored करें in different activities के अंदर. In the treatment option, we can use cholinesterase inhibitor, methylphenidate, effective in small but short-term studies are there for that. Okay, then depression है, insomnia है, wandering है, यानी they are walking too much here and there and they start begin to lose the weight है. No drug will stop this in the patients from wandering because this is very common. Then hallucination वगैरह है because they are thinking too much and that they can't do anything and यानी they are depending upon some other persons like brothers, husband, like that. So psychosis happen. So in this type of condition, we can use, atypical antipsychotics like risperidone, olanzapine, quetiapine, aripiprazole. We can try, but very low doses because it depends upon risk to benefit ratio. We can check and then use it in these type of patients. Then aggression hai, resistance to care hai. This is the most difficult and best response is to treat non-pharmacological. Drugs under investigation for agitation like prazosin, dextromethorphan, quinidine, citalopram are treatment options for this. So then next topic, this is all about the behavior symptoms and the dementia. Now another topic which is very common in the geriatric class is urinary incontinence. What is urinary incontinence? Is the unintentional passing of urine because of the loss of the bladder control. It is common problem which affect throughout a million pupils, especially this age group of people. Physiology is during filling beta-3 adrenergic stimulation जो है वो relax करते detrusal को to increase the capacity of the filling actually. Then alpha adrenergic stimulation जो है वो tighten करती है internal bladder के sphincter को. Okay, which can hold the urine. Then acetylcholine M3 mediates involuntary bladder contractions. Then normal bladder emptying occurs with a decrease in urethral resistance and contraction of the bladder muscle. I will show you this much better in the next slide. So what is happening due to aging, the bladder elasticity or capacity also decrease और उसकी वजह से जो है more frequent voiding होना शुरू हो जाती है age group people के अंदर क्योंकि decline आ गया है. एंड पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स जैसे हैं उनके अंदर लॉस ऑफ ईस्ट्रोजन की वजह से जो है डिक्लाइन आ जाता है ब्लैडर की लाइनिंग में और इसमें एंड आउटलेट में और यूरिथ्रल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है. ठीक है, डिक्रीज हो जाती है सॉरी. देन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट में क्या होता है कि डिक्रीज फ्लो रेट हो जाता है स्पेशली इन मेन. ओके, सो उसकी वजह से भी जो है वो ड्रिपिंग वगैरह के इश्यू आना शुरू हो जाते हैं, फ्लो जो है वो रुक रुक के आ रहा होता है. So this is the picture actually that you can see in number 1 bladder जो है normal filling हो रही है, detrusal muscles relax हैं, urethra का sphincter जो है it's contract है, pelvic floor जो है वो contract हुआ हुआ है. So there is no यानी movement of the urine flow out. Then second picture, first sensation to void actually. In this bladder is half full है, urination voluntary है, inhibited until the appropriate time come to void actually. Then number 3,
normal desire to avoid, because now the bladder is almost full, 3/4 full hai. Then what happened? Then maturation started, the distressal muscles contract and the pelvic floor muscles relax and the urine flow occur. So there is different types of urinary incontinence and drug induced causes as well, like urge and overactive bladder hai, stress incontinence hai, overflow incontinence hai, functional incontinence hai, and mixed incontinence hai. Description, how we can define all these. So urge and overactive bladder, there will be loss of moderate amount of urine with an increased need to void. यानी यूरिन का लॉस तो हो रहा है जो कि मॉडरेट अमाउंट में है, जबकि इंक्रीज नीड टू वॉइड है, यानी आपको अर्ज हो रही है बट आप बहुत मॉडरेट अमाउंट में यूरिन को पास कर रहे हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है? डिट्रेसल इंस्टेबिलिटी कैन कॉज बाय सीएनएस ड्यू टू डैमेज फ्रॉम द स्ट्रोक. दैट स्ट्रोक की वजह से जो सीएनएस में इंस्टेबिलिटी हो जाती, यानी इम्पैक्ट आता है, उसकी वजह से जो है डिट्रेसल मसल में इंस्टेबिलिटी होती है टू डू देयर फंक्शन. ओके, सो ड्रग इंड्यूस कॉज में आ जाता है कोलिनर्जिक एजेंट्स दैट स्टिमुलेट द ब्लैडर सच एज बिटानिकॉल एंड cholinesterase inhibitor that can also cause this type of incontinence. Then stress incontinence, there is a loss of a small amount of urine with increased abnormal pressure. Like if you sneeze or cough, you will feel that you will pass a small amount of urine. Okay, stress incontinence is more common post-menopausal women as well because उनकी जो resistance वो decreased होती है urethra की तरफ. इनमें फिर alpha blockers such as prazosin also decrease the urethral sphincter tone है. Okay, then overflow incontinence hai. Overflow incontinence is actually loss of urine because of excessive bladder volume caused by the outlet obstruction or an acontractile distressal. उसमें PVR is often high है, greater than 300 ml है, यानी void residue जो है indicating incomplete emptying time, यानी अगर वॉल्यूम उसका ज्यादा है तो उसका मतलब जो ब्लैडर है वो एम्प्टी नहीं हुआ है प्रॉपर. उसके अलावा जो ड्रग इंड्यूस कॉजेज हैं वो हैं एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ओपियोइड्स हैं, डिक्रीज डिट्रेसल मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से भी ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो सकती है. देन फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस है इनएबिलिटी टू रीच द टॉयलेट बिकॉज ऑफ मोबिलिटी कॉन्स्ट्रेंट्स. इसके अंदर जो है यूजुअली क्या होता है, जो जेरियाट्रिक की क्लास है उसके अंदर सिडेटिव ड्रग्स ले रहे होते हैं जिसकी वजह से वो कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, उनको कंफ्यूजन होती है. उसके अलावा वो डायरेटिक्स पे भी होते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्लास ऑफ ड्रग्स आर कार्डियक पेशेंट्स एंड दे आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स. और डायरेटिक्स बहुत कॉमन होते हैं, लूप डायरेटिक्स और थायराइड डायरेटिक्स, जिसकी वजह से जो है उनमें इंक्रीज वॉइडिंग हो रही होती है. तो क्योंकि वो इमोबिलिटी का भी शिकार होते हैं, लाइक समटाइम्स दे हैव रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दे हैव प्रॉब्लम टू गो टू द बाथरूम ऑन टाइम. सो इन वजूहात की वजह से भी जो है ना आप यानी दिस विल फॉल इन द फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस. एक्चुअली द मल्टीपल थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड. सो मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस है, it has more than one cause, usually stress, overactive bladders together make it like that. So इसके अंदर भी आप यूं भी कह सकते हैं कि इमोबिलिटी के आप यानी आप ओल्ड एज वुमेन है, उसके अलावा आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सो इमोबिलिटी की वजह से और फिर आपके ऊपर जो पोस्ट मेनोपॉज ईस्ट्रोजन की डिक्रीज की वजह से जो इम्पैक्ट आया है उसकी वजह से भी जो है फिर यानी दिस विल फॉल अंडर मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस. Okay, just a minute. I don't know. I have problem with the slide movements. So this is a picture of type of incontinence: stress, urge, overflow, neurogenic as neurogenic, जैसे आपको मैंने बोला कि nervous system के function की वजह से भी हो सकती है. Then what are the different drug treatments we can use it? So urge और overactive bladder में anti-muscarinic and anticholinergic agents mostly use होते हैं. Oxybutynin, फीसोटेरोडीन है, सोलिफेनासिन है, टोल्टेरोडीन है. ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है वो क्लिनिकल एफिकेसी के लिहाज से मॉडेस्ट है. डिफरेंस है इन एडवर्स रिएक्शन इन बिटवीन ऑल द these drugs और क्लिनिकल डिफरेंसेस भी हैं इन एफिकेसी में ऑल एजेंट्स के दरमियान. लॉन्गर एक्टिंग फॉर्मुलेशंस
may have better tolerated. उसके अलावा beta-2/3 agonist हैं जिसमें मेरा बिग्रॉन है, appears well tolerated but has not been compared with antimuscarinic actually. तो फिर इंट्राड्यूटेसर इंजेक्शंस भी हैं ऑन बुटालोनियम टॉक्सिन्स का। ओके, उसके अलावा फिर स्ट्रेस के अंदर आप अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट यूज कर सकते हैं, स्यूडोएफेड्रिन, फिनाइलेपिनेफ्रिन। एविडेंस जो है एफिकेसी का एविडेंस बहुत लिमिटेड है इनका। उसके अलावा ट्रॉपिकल ईस्ट्रोजन जो है वो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स के अंदर यूज किया जा रहा होता है। कॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन क्रीम्स और टैबलेट्स यूज की जा रही होती हैं। और उसके अलावा फिर सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन एसएनआरआई रीअपटेक इनहिबिटर्स लाइक डोलोक्टाजिन भी यूज हो रहा होता है। नॉन एफडीए है फॉर स्ट्रेस यूआई के लिए, बट मे रिड्यूस द सिवियर ऑफ इनकॉन्टिनेंस। ओके, सो उसके एडवर्स इफेक्ट की वजह से जो है इसका यूज जो है वो लिमिटेड है। देन ड्रग ट्रीटमेंट, अदर ट्रीटमेंट्स लाइक ओवरफ्लो है, फंक्शनल है, मिक्स्ड है। ओवरफ्लो के अंदर जो है अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट यूज किए जा सकते हैं, जैसे एल्फ्यूजिन है, टेम्सोलिन है, सिल्डोसिन है, डॉक्सासिन, ट्राइजोसिन, प्राइजोसिन यूज किए जा रहे होते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं डिपेंड होते हैं सेलेक्टिविटी टू द रिसेप्टर, और उसके अलावा प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी इसके अंदर एक आपका इम्पैक्ट रखती है, क्योंकि ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस के अंदर जो ओवरसाइज प्रोस्टेट होता है उसकी वजह से भी हो सकती है ड्रिपिंग, or they have the urge but they cannot void properly. Okay, क्या कह रही है? हेलो, can you unmute someone? अच्छा सही है। I don't know who have. Can you please mute? ओके, सो 5 अल्फा डिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं, उनके अंदर फेनिस्टेराइड है, ड्यूट्रेस्ट्राइड है। ये वो ड्रग्स हैं जो कि एनलार्ज प्रोस्टेट में भी यूज किए जा रहे होते हैं, यानी अल्फा एड्रीनर्जिक और एंटागोनिस्ट और 5 अल्फा डिडक्टेज इनहिबिटर्स to slow the progression of this prostate enlargement, and they will reduces the size of prostate as well and alter the prostate specific antigen value as well. Then cholinomimetics हैं, betanicol, stimulate the detrusal muscles but also systemic cholinomimetic impacts हैं। फिर phosphodiesterase type 5 inhibitors tadalafil है 5 मिलीग्राम once daily, जो कि है approved BPH के लिए। सॉरी, फंक्शनल के अंदर no drug treatment required, consider the interventions to remove that potential cause or barriers। और इनके लिए ये होता है कि जैसे अब अगर इमोबिलिटी की वजह से है तो उनके जो टॉयलेटिंग है उनको स्केड्यूल किया जाए, उनको असिस्ट किया जाए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी टॉयलेटिंग के लिए। और जो मिक्स्ड है उसके अंदर फिर फोकस किया जाता है प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स को, कि किस मेजर प्रॉब्लम की वजह से ये हो रहा है। तो फिर एज पर दिस predominating cause, we can treat the individual. Okay. Then non-pharmacological interventions में ये है कि एक्सरसाइज है, वेट लॉस है, उनके अंदर जिनका बॉडी मास इंडेक्स ग्रेटर देन 25 to 35 kg per meter square है। स्ट्रेस के लिए pelvic floor exercise है, which are very famous and first line therapy for the stress incontinence, and समटाइम्स स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो है वो सर्जिकल रिपेयर से भी यूजुअली रिस्पॉन्ड करते हैं। अर्ज के अंदर भी ऑल्सो pelvic फ्लोर एक्सरसाइज इन कॉम्बिनेशन विद मेडिकेशंस जो हैं वो यूज किए जा सकते हैं। ब्लैडर ट्रेनिंग टू इंक्रीज द टाइम बिटवीन द वॉइडिंग इन अर्ज कॉन्टिनेंस, scheduled as I told you, scheduled and timed the voiding may also help the patient, especially the patients with dementia. Prostatectomy in men or self catheterization for severe overflow incontinence, यानी जिनके अंदर प्रोस्टेट BPH का प्रॉब्लम है उनके अंदर या तो जो आपको प्रोस्टेट TURP किया जा रहा होता है उसको ट्रांससेक्शनल किया जा रहा होता है, और साथ में सेल्फ कैथेटराइजेशन की वजह से जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। Then there is a clinical case that 75 years old woman reports the urinary incontinence, urgency, frequency and loss of urine, which when she cannot get to the bathroom in time,
She also wears a pad at night that she changes 2 or 3 times because of incontinence. Her medical history is significant for MCI. MMSE score is 25 by 30. Osteoarthritis and hypothyroidism. A urine analysis is negative. Physical examination is normal and her PVR is normal, यानी less than 100 है. Which therapy would be best to initiate for this patient at this time? So इसके अंदर क्या है कि urgency है, loss हो रहा है, उसको osteoarthritis भी है, so maybe there is immobility है उसको जाने में, ठीक है, analysis normal है. तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो as I told you, pelvic floor exercise is usually the first line. और उसके साथ हम क्या करेंगे, सोलिनाफिन यानी अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जो हैं वो यूज करेंगे. So answer C is the option. Then we have benign prostatic hypertrophy. This is also a most common cause, यानी disorder है geriatrics की class के अंदर. BPH is usually developed after 40 years of age. By age of 60, almost 50% of all men have BPH, and around 85, yani at the age of 85, 90% have this. Pathophysiology and clinical presentation, there is a type 2 5-alpha reductase which will facilitate the conversion of testosterone to dihydrotestosterone, which then result in the prostate gland. So this will, give you the lower UTI symptoms. What there is obstruction in the voiding, decrease force होती है, decrease hesitancy होती है, dribbling occur होती है यूरिन के अंदर, स्टोरेज होती है जिसमें इरिटेटिव सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, यूरिन अर्जेंसी होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी आप फील कर रहे होते हैं बट यू कैन नॉट वॉइड प्रॉपरली. नॉक्टूरिया होता है, यानी जब आप प्रॉपरली वॉइड नहीं कर पाते हैं तो इन द ड्यूरिंग नाइट टाइम ऑल्सो यू विल फील. डिस्यूरिया हो सकता है जिसके अंदर आपका यूरिन यानी रुक जाता है. सो द अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन सिम्टम्स इंडेक्स जो है AUASI स्कोर जो है हेल्प अस टू डिटरमाइन द सिवियरिटी एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट. हायर नंबर्स विल इंक्रीज द more severe symptoms. Then evaluation criteria is there is a medical history. We can do the digital rectal examination, you burn serum creatinine and urine analysis. Also prostate specific antigen level is suspicious for this, so treat with 5-alpha reductase inhibitor. This level is suspected for prostate cancer as well. So if significant urinary retention is suspected, we can assess the PVR, yani post-voidal residue. If greater than 50 liter, then patient have a elevated risk of infection, because the more volume of urine retained in the bladder means there will be more chances of the risk of the infection, UTIs. So assess for medication that may exacerbate BPH symptoms. So we need to assess those medications which can exacerbate. Then alpha adrenergic agonists like decongestant can stimulate smooth muscles contraction in the prostate and urethra and obstructing urine flow through urethra. उसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग्स हैं like urinary and GI antispasmodics, antihistamine, TCAs, phenothiazine also then increase the ability of the bladder detractor muscle to contract and empty the bladder. So we need to take care of these type of drugs which can exacerbate these symptoms. So diuretics also can increase the urinary frequency and volume, and testosterone replacement can also stimulate the prostate growth. So evaluation criteria, as I told you, AUASI score 0 to 7 is the mild. So you will just do the waiting or watchfully, observe the patient for the symptoms. Then score from 8 to 19 falls under moderate, and the candidates are now for medical treatment. Then score of 20 and more means there is a severe disease, and they should assess for the prostatectomy. Yani maybe there will the medical treatment is no more effective, and the patient need to go for this surgical repair. Then drug treatment involve alpha adrenergic blockers like moderate to severe yani this scores lower the points. So digoxin and
terazosin decrease the blood pressure, so we can take care of those patients who are having hypotension problem. So tamsuline and sildenafil and alfuzosin have less impact on the hypotension, yani the impact is less. So tamsuline is also we need to take care to use it because it causes intraoperative floppy iris syndrome. Then another class of drug is alpha reductase inhibitors. The drugs falls under this drug categories finasteride and dutasteride. There is no superiority over any agent reserved for those who have a large volume of prostate, yani more than 40 grams. So baseline PSA test is recommended because it may lower the PSA and cause cancer. So phosphodiesterase type 5 inhibitors, PDIs, tadalafil 5 milligram once daily, usually using, but FDA not recommend in combination with alpha blocker because of the cause of the hypotension. So usually alpha blockers and if PDIs are using together, so there should be a 4-hour separation in between the doses. Then combination therapies can be used with the large prostate size and elevated PSA, like we can use alpha reductase inhibitor along with the alpha adrenergic blockers, like finasteride with doxazosin or dutasteride with tamsuline. And in severe symptoms, definite we will go to surgery because these are not respond to the medication therapy. Then there are some supplements, like this is just systemic reviews which are suggesting like sol palmito plant extract. So these are just reviews हैं. उसके अलावा using this agent with 5 alpha reductase inhibitor may reduce the efficacy of reductase inhibitors. उसके अलावा beta sterol है. They also show in some studies that some benefits in this BPH. Then clinical case studies. An 85 years old man with LUTS visits her physician, who determines his AUASI score is 15. His blood pressure is 118 by 70 mm in sitting. A digital rectal examination confirms the diagnosis of BPH, and physician schedules further workup, including prostate ultrasound, which shows a prostate volume of 31 gram. Which therapy is best at this moment? So in this one, if we will check, the prostate volume is less than the 31, yani it's not more than 40 grams, because as we discussed in previous slide, that if this 5 alpha reductase inhibitors we are using when the prostate size is 40 or above. So here we will choose, because two option B and D we will remove from here. So we have a choice of terazosin and tamsuline. So we will go for option C. Now another is osteoarthritis. Okay, this is also a more disorder in the geriatrics patients. In osteoarthritis, it is actually a form of arthritis which is highly associated with aging. It's usually happen in large weight-bearing joints like hip and knee. These are the most commonly affected. Sorry, we have a shortage of time, so maybe I will go a little bit fast. So if you have any questions, you will just share it in a chat box, and later I will reply for those. So pathophysiology of these osteoarthritis includes age, female sex, obesity, genetics, sport activities हैं, occupations हैं, previous injuries also impact करते हैं, acromegaly है, other chronic illness है. तो these are risk factors हैं, क्योंकि जैसे एज बढ़ती है तो आपकी जो बोन्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है. ठीक है. सो जो स्पोर्ट एक्टिविटीज हैं, सम स्पोर्ट्समैन हैविंग सम ड्यूरिंग द स्पोर्ट एक्टिविटीज और प्रीवियस इंजरीज जो हैं वो भी आर्थराइटिस कॉज कर सकते हैं. फिर सिंगल इंजरीज और रिपीटेड माइक्रो इंजरीज आल्सो मे इनिशिएट और एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. कार्टिलेज का लॉस होता है विद इन द जॉइंट, और इसकी वजह से जो है कॉन्ड्रोसाइट्स का फंक्शन जो है
वो फॉर्मेशन से डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से ऑल्सो जो है बोन जॉइंट्स को सपोर्ट नहीं मिलती। ओके, सो दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर पैथोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। गोल थेरेपी में ये है कि आप पेन को और स्वेलिंग को रिलीव करते हैं, मेंटेन और इम्प्रूव करते हैं जॉइंट को, फंक्शन को प्रिवेंट करते हैं, लॉस ऑफ फंक्शन एंड मेंटेन और इम्प्रूव, सो दैट यू कैन मेंटेन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो ड्रग थेरेपी के अंदर जो है पेन किलर्स आते हैं। फर्स्ट लाइन जो है एसिटामिनोफेन एज नीडेड डोजेस में यूज किया जाता है, 4 ग्राम मैक्सिमम डोज है, दिस इज वेरी कॉमन, सबको पता है। एनसेड्स हैं, अगर एसिटामिनोफेन वर्क नहीं करता तो यू कैन गो फॉर एनसेड्स, बट यूजुअली वी अवॉइड द क्रोनिक यूज बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द किडनी फंक्शन। ओके, सो कॉक्स2 इनहिबिटर जो है वो यूज किए जा सकते हैं पीपीआईज के साथ for the patients who having a sort of GI ulcer or GI problems. Naproxen जो है वो safest है in respect to the cardiac risk. Then topical agent है जो कि topically जो है वो small joints के ऊपर लगाए जा सकते हैं, like diclofenac है, capsinogen है, फिर intra-articular injections हैं, like intra-articular glucocorticoid injections है, methylprednisolone, temsolone जो है वो रिपीटेड दिया जाता है एवरी 3 months, और इंट्रा आर्टिकुलर हाइलुरोनिडेज भी दिया जा रहा होता है इफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो इनफेक्टिव होते हैं तो। फिर ग्लूकोजामीन का जो है विद और विदाउट कॉन्ड्रोटिन 400 मिलीग्राम देते हैं, दिस इज फॉर क्रॉनिक थेरेपी, इट्स जस्ट अ सपोर्टिंग थेरेपी एक्चुअली, इट विल नॉट इम्पैक्ट ऑन द पेन। ओपियोइड्स है, मॉडरेट टू सीवियर पेन के अंदर दिए जा रहे होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में। These are given to the mostly old age patients who are not respond to the initial therapies of acetaminophen, rather than using the NSAIDs, because it's not good to use NSAID as a chronic use के लिए। फिर tramadol alone or in combination with acetaminophen is most commonly used. Okay, then non pharmacological treatment में patient को educate किया जाए, lifestyle therapies की जाए, उन्हें counsel किया जाए, ठीक है, उन्हें बताया जाए when they need to seek the care। अगर वेट यानी वेट बेयरिंग जॉइंट्स के ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा आता है तो उनको एक्सरसाइज और वॉकिंग के बारे में बताया जाए, so that they can weight loss, they will यानी this will help in the weight loss of those people। physical occupational therapies की जाए, और फिर at the end जो है फिर सर्जरी आ जाती है, यानी हिप एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट। क्लिनिकल हिस्ट्री में थोड़ा सा मूव ऑन कर रही हूँ, बुक से है, आप देख सकते हैं, बिकॉज वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड आई हैव स्टिल टू फर्दर क्लिनिकल केस डिसऑर्डर्स हियर। देन ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इट्स ऑल्सो अ कॉमन इन दिस ओल्ड एज जेरियाट्रिक क्लास। It's usually a systemic disease है, characterized होता है bilateral inflammatory arthritis है actually, it's not like a same osteoarthritis। इसके अंदर usually जो है small joints जो है वो affect होते हैं, like hand के, wrist के और feet के। usually RA occur at any age, but increasing prevalence जो है वो up to the age of 70 है। It's usually an autoimmune disease है with strong genetic predisposition, like यानी if आपकी family में अगर run हो रहा है तो usually there will be a more chances that it will comes to you or occurs in you or in geriatrics। Then pathophysiology और clinical presentation जो है initial inflammatory activation जो है वो unknown होती है, but once activated the immune system produces antibody and cytokines which accelerate the destruction of the cartilage and the joints। So patient presents with small joint pains, stiffness, fatigue and other inflammatory symptoms। Symptoms include warmth होती है, redness हो रही होती है, swelling हो रही होती है small joints के अंदर, जो कि usually symmetrical distributed होती है। RA also affect करता है other organs को, usually pulmonary fibrosis, vasculitis और dry eyes जो है बहुत common है, जिसको आप शॉग्रेन सिंड्रोम्स भी कह सकते हैं, जिसके अंदर आपके नोड्यूलर ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं यहाँ। उसके अलावा जो है लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो शो कर रहे होते हैं पॉजिटिव, आपका RA फैक्टर पॉजिटिव होता है, एलिवेटेड सेडिमेंट ESR बढ़ा हुआ होता है, C रिएक्टिव प्रोटीन्स भी बढ़े हुए आते हैं, एंटीसाइक्लिक सिट्रिलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज होती हैं टेस्ट के अंदर पॉजिटिव,
और दिस एनीमिया शो कर रहा होता है पर्सन उनको, ठीक है, पेशेंट्स को। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अगर आप आते हैं तो रेस्ट किया जाए ड्यूरिंग द डिजीज का जब फ्लेयर अप है। उसके अलावा ऑक्यूपेशनल और फिजिकल थेरेपी टू सपोर्ट द मोबिलिटी एंड मेंटेन द फंक्शन, इसीलिए कहा जा रहा होता है कि जो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं उनको कि वो वॉक करें, स्मॉल एक्सरसाइजेस करें, ताकि वो मसल्स उनके स्ट्रॉन्ग हों और वो सपोर्ट करें फिर उनकी बोन्स को, और वो मेंटेन कर सकें अपने फंक्शंस को। तो मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल वेट, एज आई टोल्ड यू, अवॉइड ओवरवेट एंड ओबेसिटी। So this will also ultimate reduce the biomechanical stress on joints. assisted device होते हैं, जब आपको पेन हो तो आप ग्रिप्स यूज करें, ओके। देन सर्जरी फॉर टेंडन्स एंड जॉइंट्स समटाइम्स नीड टू डू। देन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अगर आते हैं तो ट्रीटमेंट गोल इज टू कंट्रोल द inflammatory processes so that disease remission occurs. This lead to reduce relief in the pain and maintains the function and improve the quality of life. Treatment responses can be measured by reduction in the number of affected joint, यानी आप किस तरह मेजर कर सकते हैं रिस्पॉन्स को, कि एक तो स्वेलिंग डिक्रीज होगी, जो टेंडरनेस है, स्टिफनेस है, दिस विल डिक्रीज होगी, आपको पेन में इम्प्रूवमेंट फील होगी, डिक्रीज होगा अमाउंट ऑफ मॉर्निंग स्टिफनेस जो होती है पेशेंट को, वो उसको डिक्रीज होती हुई महसूस होगी। उसके अलावा रिडक्शन होगी, सीरोलॉजिकल मार्कर्स जो हैं आरएफ के, दे विल रिड्यूस, और इम्प्रूव होगा डेफिनेट क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो स्केल है वो इम्प्रूव हो जाएगा। देन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो डिजीज मॉडिफाइंग डिमांड्स हैं, डिजीज मॉडिफाइंग एंटीरोमेटिक ड्रग्स, उनमें नॉन बायोलॉजिकल हैं और बायोलॉजिकल भी हैं। नॉन बायोलॉजिकल जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट अप्रोच जो है वो इनिशिएट होती है यूजुअली विद इन 3 months ऑफ डायग्नोसिस। मीथोट्रेक्सेट प्रेफर किया जा रहा होता है। स्टेप डाउन अप्रोच के अंदर स्टार्ट विद डिमांड्स टुगेदर विद एनसेड्स हैं, जिनके अंदर जो है स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं टू कंट्रोल द पेन एंड टू रिड्यूस द यूज ऑफ एनसेड, एज जॉइंट डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन इज कंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ दैट, एंड रिड्यूस डिमांड स्लोली, सो यानी डू नॉट डिसकंटिन्यू the all demands even if the patient is in remission phase. So methotrexate has the most longest term data और better outcomes हैं rheumatoid arthritis में। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन जो है स्लोएस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन है, बट इट इज अ फर्स्ट लाइन यानी चॉइस ऑफ ड्रग है इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन वुमेन्स है। सल्फासालाजीन इज आल्सो अ ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी बट हैविंग वेरी स्लो ऑनसेट, सो यानी यूजुअली डॉक्टर prefer to use hydroxychloroquine. Leflunomide substitute है with efficacy comparable with the methotrexate. Combined DMARD therapy can be used for patients with poor prognostic indicators. Then biological DMARDs है। Biological DMARDs के अंदर जो है are used in combination with methotrexate for severe disease, okay, or as alternative if non-biological DMARDs are ineffective or contraindicated, यानी if methotrexate और the first class हमने यूज की हो और इम्पैक्ट नहीं आ रहा हो, इनफेक्टिव हो या पेशेंट को contraindicated हो, so then biological DMARDs यूज किए जा सकते हैं। In this class there is tissue necrosis factor TNF inhibitors are used, which having etanercept, infliximab, adalimumab or rituximab. The bold ones are most commonly used actually. Then non-TNF biological के अंदर anakinra, rituximab है, tolicimab है, abatacept है. Then biological kinase inhibitors हैं जो कि tofasitinib है. Okay, so NSAIDs में glucocorticoids or both can be used for immediate pain and inflammatory relief. Then NSAIDs do not actually affect the disease progression actually, but their anti-inflammatory effect जो है वो within 1 to 2 weeks में daily dosing की वजह से हो जाता है, जिसकी वजह से एनाल्जेसिया का effect start हो चुका होता है, ठीक है। Then glucocorticoids जो हैं dosed at 10 milligram daily or less, and they are not recommended for long-term use because of the adverse effect or long-term complications. जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह है वो आ जाता है पेशेंट्स के अंदर, देन अगेन यू नो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, सो दे आर ऑफन यूज एज ए ब्रिजिंग थेरेपी के तौर पे यूज किया जाता है टू प्रोवाइड द एंटी-इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट
while waiting to DMARD to take their effect actually. And after that, slowly taper down to bring it back to the very low dose. So this is the chart. I already take it from the book, so you can go through this, in which there is doses वगैरह सब prescribed की हुई हैं, ठीक है, और इनके common side effects और किस जगह पे किसको यूज करना है, ये सब है, तो आप बुक से इसको देख लें. ये सारे नॉन TNF फैक्टर्स और काइनेज इनहिबिटर्स के बारे में है. अब इसके अंदर जो कोमॉर्बिड कंडीशंस आती हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, तो अवॉइड करना है TNF इनहिबिटर्स को इन द पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. लो डोज एस्प्रिन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, स्टैटिन्स और कॉम्बिनेशन थेरेपी शुड बी कंसीडर्ड टू लोअर द कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स, ठीक है. देन इन्फेक्शन है, इन TNF फैक्टर्स के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन का रिस्क एलिवेट हुआ होता है, पर्टिकुलरली पर्मिनली इन्फेक्शन और सेप्सिस. ट्यूबरक्लोसिस की स्क्रीनिंग रिक्वायर्ड होती है, who are considered for this therapy. Then immunization are best given before initiating DMARDs or biological. Should be 2 weeks waiting time period recommended before starting the biologics. Then avoid zoster or other live vaccines जो हैं while the patient is on DMARDs. So avoid करना चाहिए. Patient with hepatitis B or C, if treated with effective antivirals, are treated the same as patient without hepatitis. So, however, the untreated disease DMARDs are preferred to TNF inhibitors. उसके अलावा malignancy common है, particularly GI cancers और lymphoproliferative disorders. Osteoporosis common है in patients with RA, so calcium, vitamin D के supplements recommended होते हैं उनको. Bisphosphonate also should be considered for prevention if patients are on prednisolone 5 mg or more daily prescribed. यानी as I told you that osteoporosis का chance होता है क्योंकि patient glucocorticoids ले रहे होते हैं, even if they are on low dose, so there is a chances, so bisphosphonate considered किए जाते हैं, ठीक है. So clinical case I will skip. Then this is the last topic. This is actually newly added in this BCPS course. When I gave it 2 years back, this was not there. So I will just quickly go through this one as well. So what is gout actually? It is caused by actually hyperuricemia. Serum urate concentration is more than 6.8 milligram per deciliter, which will result in the deposition of the crystal in this extracellular fluids of the joint, which then characterized by severe joint pain होता है, swelling होती है, redness होती है. This is a form of, you can say, inflammatory arthritis होता है, और इस फेज को कहा जाता है acute gouty arthritis और acute gout attack, ठीक है. अब डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है? Made by combinations of clinical pictures और increased uric acid, यानी उसको चेक किया जा सकता है, like as I told you, if it is more than 6.8 milligram per deciliter. Joint aspiration जो है वो usually difficult होता है क्योंकि patients जो है severe pain में होते हैं, so often they are refused to do this aspiration in the acute attack. So the best time is to check this uric acid is 2 times after the flare, as during the flare sometimes this uric acid may be low. Okay, so फैक्टर्स और ट्रीटमेंट गोल्स में क्या है? प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में हाई मीट है, सी फूड की कंजम्पशन अगर ज्यादा किया हुआ हो, फैटी एसिड फैटी फूड का इंटेक ज्यादा हो, हाई इंटेक ऑफ बियर और स्प्रिट्स वगैरह हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो. सो ट्रीटमेंट गोल क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट गोल होता है कि मिनिमम सीरम यूरेट टारगेट किया जाए, यानी लेस देन 6 मिलीग्राम डेसीलीटर, और यानी सीरम यूरेट टारगेट ऑफ 5 milligram per deciliter or less may be needed to improve the gout sign and symptoms, especially if tophi are present. Okay, so decrease the frequency of gout attack as well. ये भी एक treatment goal है. अगर हम maintain कर लेंगे serum urate के target को, so definite the flare ups जो है और उसका attack जो है वो decrease हो सकता है. Usually classification of gout में 4 stages होती हैं. Asymptomatic है जिसके अंदर disease तो होती है but symptoms नहीं आ रहे होते, pain नहीं होता, swelling नहीं होती. देन एक acute gout आता है जिसके अंदर आपके पास स्टिफनेस है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, वार्म फीलिंग हो रही होती है जॉइंट्स के अंदर. और कौन से जॉइंट्स होते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगी नीचे. फिर इंट्रा क्रिटिकल गाउट होता है जो कि इंटरवल्स होते हैं बिटवीन द अटैक्स, यानी साल में 2-3 मरतबा विद गैप जो है वो हो रहे होते हैं अटैक. फिर एक वक्त आता है कि वो क्रॉनिक रिकरेंट गाउट हो जाता है. क्रॉनिक फेज होता है जो कि रिकरेंट चल रहा होता है.
अब जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट में लार्ज जॉइंट्स हैं जैसे नी, एंकल के, रिस्ट के, एल्बो, हिप और जॉइंट शोल्डर्स के हैं। मीडियम जॉइंट्स के अंदर रिस्ट, एंकल और एल्बो आ जाता है। फिर स्मॉल जॉइंट्स में इंटरफेरेंजियल यानी ये अंगूठे के साथ जो आपका जॉइंट है वो इन्वॉल्व होता है। और यूजुअली जो है ना वो ये वाला जॉइंट सबसे कॉमन जो है वो फर्स्ट फेज के अंदर पेन और स्वेलिंग आपको जीरियाट्रिक्स के पेशेंट्स को फील हो रही होती है। ठीक है, सो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दिस चार्ट आई टुक इट फ्रॉम आवर वर्कबुक। अब इसके अंदर लाइफस्टाइल और जनरल हेल्थ है कि वेट लॉस आप करें इफ ओबीज हैं, ओवरऑल हेल्थ जो है वो हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, स्मोक सेसेशन करें, प्रॉपर हाइड्रेशन करनी चाहिए पर्सन्स को जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो। उसके अलावा अब इस चार्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि फूड और ड्रिंक जो कि अवॉइड करनी चाहिए या जिन फूड और ड्रिंक्स को लिमिट करें, और फूड और ड्रिंक जिनको इनकरेज किया जाए। तो वो फूड जैसे मैंने कहा कि ऑर्गन मीट्स है जिनमें प्यूरिन ज़्यादा है, लाइक लिवर, किडनी है, इनको अवॉइड करना चाहिए। जो ब्रेवरेजेस हैं, स्वीट सोडा यानी सोडा वगैरह है, बियर है, इनको, अल्कोहल को जो है उसकी कंजम्पशन को डिक्रीज करना चाहिए क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी से भी जो है वो फिर पुअर कंट्रोल आता है। यानी आप अगर मेडिकेशन और ट्रीटमेंट थेरेपी भी ले रहे हो तो फिर वो आप कंट्रोल में नहीं आता। देन कुछ फूड और ड्रिंक है जिनको हमें लिमिट करना चाहिए, जैसे मैंने कहा बीफ है, सी फूड है, इसको आप यानी सर्विंग साइज को लिमिट कर लें। उसके अलावा जो सोडा है या टेबल सॉल्ट है, आप जो फ्रक्टोज कंटेनिंग जो जूसेस हैं, हाई फ्रक्टोज कंटेनिंग जूसेस, उनको लिमिट में लाएं, अल्कोहल को लिमिट करें। ठीक है, और फूड जिनको इंकरेज करना चाहिए उसके अंदर आपके पास लो फैट और नॉन फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आप इंक्रीज करें और वेजिटेबल्स को का यूजेज इंक्रीज करें। देन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट में जो है, एक्यूट गाउट में एक्चुअली क्या होता है, आप सिवियरिटी ऑफ एक्यूट गाउट का एसेस करें एंड देन you can select the treatment according to the severity. For acute attack, initiate the therapy within 24 hours of the onset, and the oral colchicine or NSAID और glucocorticoids जो हैं वो appropriate first line agents हैं for gout के flare up में। ठीक है, in acute prophylaxis you can initiate concomitant anti-inflammatory therapy along with the ULT यानी यूरिक एसिड लिमिटिंग थेरेपी, जो कि यूजुअली क्रॉनिक पेशेंट्स में चल रही होती है, तो आप एंटी इंफ्लेमेटरी थेरेपी के साथ प्रोफाइलैक्सिस में यूज कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड, आई थिंक सो दिस वन के इंटरक्रिटिकल गाउट भी होता है और क्रॉनिक रिकरेंट, तो उसके अंदर फिर आप जो है ये वाली थेरेपी यूज करेंगे। फिर सिलेक्शन जो है वो बेस्ड होती है पेशेंट के फैक्टर्स के ऊपर कि टॉलरेबिलिटी के लिहाज से आप यूज करेंगे। कंटिन्यू करना चाहिए प्रोफाइलैक्सिस फॉर 3 to 6 months with ongoing evaluation, especially for the patient who are experiencing continuous flare up जिसके अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, दिस इज द सिवियरिटी, ड्यूरेशन एंड एक्सटेंट का चार्ट है, बुक में दिया हुआ है। माइल्ड जो है वो लेस देन 4 है, मॉडरेट में 5 to 6 है। दीज आर एक्चुअली सेल्फ रिपोर्टेड है बेस्ड ऑन द विजुअल एनालॉग के थ्रू आप स्केल देख रहे हैं यूजुअली। और ड्यूरेशन के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि अगर अर्ली लेस देन 12 आवर्स के अंदर अटैक का ऑनसेट है या वेल स्टेब्लिश है, लेट है कि आफ्टर 36 आवर्स ऑनसेट ऑफ अटैक जो है ड्यूरेशन हुआ है, या एक्सटेंड देखें कि एक जॉइंट इन्वॉल्व है या फ्यू स्मॉल जॉइंट्स हैं या मल्टीपल जॉइंट्स हैं, लार्ज जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो इनकी बेसिस के ऊपर भी जो है ना आप ट्रीटमेंट इनिशिएट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो मेडिकेशन डोजिंग भी बुक से ली गई है। ठीक है, कॉल्चिसिन है, एनसेड है, देन सेलिकॉक्सिब है, इनकी देखें मल्टीपल डोजेस दी गई हैं। कॉल्चिसिन के बारे में जो है वो कहा जाता है कि लो डोज रिकमेंड की जाती है ओवर हाई डोज बिकॉज देयर इज सिमिलर एफिकेसी और मोर फेवरेबल प्रोफाइल है। तो उसके अलावा फिर एनसेड्स हैं जिनके अंदर नेप्रोक्सिन है, इंडोमेथासिन है, सिलिंडेक है जो कि यूज किया जा रहा होता है। ठीक है, और नेप्रोक्सिन, इंडोमेथासिन को और इसको एफडीए ने अप्रूव किया हुआ है, सो मोस्ट कॉमनली यूज किए जा रहे होते हैं। रीनल और हिपैटिक के अंदर आपको डोज एडजस्टमेंट करनी चाहिए। और उसके अलावा
फिर सेलिकॉक्सिब है, इसको आप यूज किए जा सकते हैं जिनके अंदर एनसेड कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो और टॉलरेट ना करें तो आप फिर सेलिकॉक्सिब जो है कॉक्स 2 इनहिबिटर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में प्रेडनिसोलोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, जो इंट्राआर्टिकुलर यूजुअली दिए जा रहे होते हैं इन कॉम्बिनेशन विद एनसेड्स और कॉल्चिसिन के साथ, ओके। देन एक्यूट गाउट प्रोफाइल एक्सेस है, उसके अंदर यानी उसके अंदर भी कॉल्चिसिन, एनसेड और ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का यूज किया जा रहा होता है, ठीक है। इस मेडिकेशन चार्ट के थ्रू आप जो है डोजिंग प्रोटोकॉल देख सकते हैं। उसके अलावा फिर अब हाइपर यूरिसीमिया है। अब मैनेजमेंट ऑफ हाइपर यूरिसीमिया क्या है? दिस इज कॉल्ड क्रॉनिक यूरेट लोवरिंग थेरेपी। इसके अंदर क्या होता है, कंसीडर करते हैं डिसकंटिन्यू द नॉन एसेंशियल मेडिकेशन जो कि कॉज कर रही होती है हाइपर यूरिसीमिया, नंबर 1। रिकॉग्नाइज करें इंडिकेशंस फॉर क्रॉनिक यूएलटी जिसमें 1 और मोर सबकुटेनियस टफाई और क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है वो इमेजिनिंग स्टडीज में आपको पता चल जाती हैं। 2 और मोर एक्यूट गाउट का अटैक पर ईयर हो, या रेडियोग्राफिक डैमेज जो कि गाउट की रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट ऑफ गाउट, ओके। सो इसके अंदर अब हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये तो रिकॉग्नाइजेशन हो गई। तो मेडिकेशन के अंदर फर्स्ट लाइन जो है वो जेंटीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स है, एलोप्यूरिनॉल को प्रेफर किया जाता है फर्स्ट चॉइस के तौर पे। कैन बी यूज इन मॉडरेट टू सिवियर क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स के अंदर। चेंजेस टू अल्टरनेटिव जेंटीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर फिबॉक्सी स्टैट है इन पेशेंट जो कि इंटॉलरेंट हो या रिफ्रैक्टरी हो एलोप्यूरिनॉल से। ऑल्टरनेटिव पे प्रोबेनासिड यूज किया जाता है, यूरिक एजेंट if at least one xanthine oxidase is contraindicated or not tolerated, यानी एलोप्यूरिनॉल एंड फिबॉक्सीजेट अगर टॉलरेट ना किए जा सकें और कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो तो फिर आप प्रोबेनासिड यूज कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ यूरोलिथियासिस और क्रेटिनिन क्लियरेंस लेस देन 50 ml per minute हो और कॉन्ट्राइंडिकेट हो वही फर्स्ट लाइन थेरेपी, फर्स्ट लाइन यूज ऑफ प्रोबेनासिड। सो इंक्रीज urinary uric acid indicates uric acid overproduction and it is also contraindicated to use in use of uric agent in this uric acid therapy. फिर उसके बाद आपके पास एड ऑन थेरेपी है लेसिन्यूरेट। ये आप उस वक्त यूज करेंगे जब अदर मेडिकेशन यानी सेलेक्टिव यूरिक एसिड रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स है, इसको ओनली आप उस वक्त यूज करेंगे जब एलोप्यूरिनॉल और फेबक्सोस्टैट is not achieving that concentration, serum uric acid concentration, so आप एड ऑन थेरेपी के तौर पे यूज करेंगे। देन लास्ट लाइन पेग्लोटिकेस है, इसको दिया जा रहा होता है यानी still if the goal serum uric acid is still not achieved or all other therapies discontinue and change to this class of the drug, okay. So if the disease burden is severe ho or patient disease is refractory ho rahi ho and patient is intolerant ho to other all options, then we can use this last line. And then this class is not yani this medication is not recommended for as a first line therapy in any case. Then lastly I can say that allopurinol is also causing hypersensitivity syndrome, usually risk of severe morbidity and hospitalization, mortality rate at 25 to 25%. इसके अंदर क्या हो रहा होता है, स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम होती है, टॉक्सिक एपिडर्मल डर्मल नेक्रोसिस, यानी दोज पेशेंट हु कैन नॉट टॉलरेट और यू कैन से हाइपरसेंसिटिविटी का चांस ज्यादा होता है एलोप्यूरिनॉल के साथ, तो दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स होते हैं, रैश होता है, वेस्कुलाइटिस होता है, ओके, समटाइम्स मेजर एंड डिजीज के सिम्टम्स भी आते हैं। हाईएस्ट रिस्क होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ थेरेपी के अंदर, और रिस्क फैक्टर्स जो है वो कॉन्कोमिटेंट थायराइड अगर डायरेटिक्स यूज हो रहे हों, रीनल इम्पेयरमेंट हो, या अफ्रीकन और अमेरिकन साउथ एशियन पर्सनस हो यानी कास्ट हो, या टेस्टिंग फॉर दिस HLA-B स्टेरिक 5801 उनके अंदर यानी दिस ग्रुप के अंदर, सो दीज आर रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको ये यानी मोर प्रोन फॉर दिस एलोप्यूरिनॉल हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम के। देन पॉइंट्स टू यानी consider, this is the last slide. So initiate anti-inflammatory prophylaxis for acute gout concomitantly with or just before the ULT in all patients.
colchicine, NSAIDs, prednisolone may be considered usually. Anti-inflammatory prophylaxis should continue for greater than a part of 3 to 6 months to have impact. Then recommended treat to target management strategy of ULT by achieving and maintaining, yani serum uric acid should be less than 6 milligram per DL rather than fixed dosing strategies. So that's all for my presentation. So Rana, where are you? Hello. Hello. No one is here. What happened? Sorry, I just saw that. Actually, I don't know. It's stuck. Please show the slide. Sorry, Ahmed. I didn't read your this message because I done, but I can't skipping the slide because of this slideshow. Actually, something happened with my laptop. So anyhow, thank you for all of you for listening. So if any questions, just send through Rana. So if best luck for your exams. Okay. Thank you so much. जी अस्सलाम वालेकुम। जी कहाँ चले गए थे आप? मैं इधर ही हूँ असल में। प्रेजेंटेशन इतनी बोरिंग थी। नहीं मैं एक्चुअली